Yes. Done. अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाएं आपका ऑनलाइन अनुभव। सर्वे लीजिए। Two teams from opposite ends of the table go toe-to-toe with 3 huge Premier League points up for grabs. I'm David Stowell up on high on Merseyside with Premier League stalwart Leon Osman for company today, and the hosts are huge favourites here, Leon. So what can Burnley do to take something away from Anfield? It will be Burnley to start us. So Liverpool unbeaten in 11 in League and Cup, against Burnley winless in 12 top-flight games. The form book and the Premier League table suggest a comfortable victory for the hosts, but the visitors will be encouraged by their opponents' inconsistency at times this season. Kirkes stepping away from Edwards with ease. Szoboszlai, Kirkes, it's a beautiful run, and it was just about scooped away in the nick of time by Lucas Pires. Oh, it's brilliant defended right at the very end after some wonderful work from Milos Kirk. Jayden Anthony here, looking to hurl one maybe, will go short instead to Esteve. Finds a way through all too easily. Lukachukwu was there, so was Pires. And Florentino hit it. Here's Ekatike, and Dubravka puts up the shutters for Burnley. I should say, a really good piece of play from Liverpool. Szoboszlai asks a few questions. Ball that was always arcing towards Burnley's goal. Oh, it's a brilliant ball. Kirkes. For the high ball towards Frimpong. Who found there was no way through. I was just saying. Jones and Gakpo, Florentino's challenge, penalty Liverpool. The leg was dangled just enough. And it will be Dominic Szoboszlai to take on the responsibility for the lead. And the crossbar saves Burnley. Dominic Szoboszlai put plenty behind that, and it came back with interest. Oh, Gakpo with a terrific hit, plenty of venom behind that. Dubravka saw it off. As to where he'd like to play the ball. Kids might fancy this. Dubravka is equal to it. Super stopped. Burnley bodies in the way once again to deny Ekatike. Yeah, I think the previous efforts that have come in on goal have been quite comfortable for Dubravka to save, but this one really did have him stretched. Ekatike away from भाई सब्सक्राइब कर दो भाई. trying to wear up his options. Dubravka trying to shovel it away. Fierce! You do not save strikes like that. It has taken a fair old while, but Liverpool make their possessional dominance count, and Florian Wirtz continues to flourish. And
into space. This is Edwards. Well, out of nowhere, a position of promise for Burnley. Off chance, really is. हिस्ट्री कहती है T20 में आज तक कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी ये कप 3 बार नहीं जीता है। और ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, क्रिकेट का मैदान है। तो इस बार हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाएं आपका ऑनलाइन अनुभव। सब लीजिए। Szoboszlai. Albeit stealing in, slaloming through the challenges, and in the end, outnumbered by Burnley defensively. Gravenberch. It's delightful footwork. Gakpo for two. And squeezed off the line by Bashir Humphries. Burnley and Konate. Well, that's one way of getting rid of the danger. Stabbing it towards his own goalkeeper, who responded appropriately. And that is a magnificent reaction save. Edwards. Oh, he's gone for it! And he's found a way through! Burnley level at Anfield. A moment to savour amid a chastening campaign. Gravenberch for Ekitike, who wants it back and would have had it but for Pires. Gakpo. Once again defended brilliantly by Bashir Humphries, who's come up with two of those. Robertson, McAllister, and Gamoa. And towards Szoboszlai. Will it roll for Jones? No. Swirling into the middle, Van Dijk's header. Ekitike through-in! And the flag is up. Liverpool joy short-lived. Yeah, I don't think it was the first ball in. I think it was actually Ekitike himself. I think it's a good delivery round the back from Szoboszlai. There you see, when Van Dijk makes the header, Ekitike just strayed into an offside position. To skip away from the challenges. Curtis Jones! And it rolls away from Ekitike. Well, when things are going your way, this falls right to the feet of Ekitike. Szoboszlai darts away from Florentino, and the deflection helps Burnley a treat. And that is that. 4 draws in a row for the champions. More Premier League points slip through Liverpool's fingers. A costly penalty miss from Dominic Szoboszlai in the first half, and other chances came and went. But it is frustration for Liverpool come full time. Liverpool 1, Burnley 1. Scholes. Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world!
ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाए आपका अनुभव। सर्व लीजिए। A lot of preparation, if that makes sense. All my cricket has been mental. As long as I feel mentally I can play the game, I work physically very hard every day of my life. It's got nothing to do with cricket anymore. It's the way I live. I think for India to win a match, they should take a Sholay coin for the toss, because what happens in a Sholay coin is that both sides are either heads or either tails. In the last 17 years, he's been always electrifying in the field, the batting, fielding, everything. रांची में हुए पहले ओडीआई में जीत दर्ज करने के बाद ब्लूज का काफिला पहुंच चुका है रायपुर। केएल राहुल लीड कर रहे हैं शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में। फरवरी के बाद इंडिया में ब्लूज के लिए खेलते दिखे पहली बार रोहित शर्मा और विराट कोहली, यानी कि हमारे रोको। जैसे रन रांची में बरसे वैसे ही रन रायपुर में बरसे, यही उम्मीद रहेगी सभी भारतीय क्रिकेट फैंस की। और इंडियन टीम चाहेगी कि ये मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त भारतीय टीम बना ले। हेलो एंड वेलकम टू फॉलो द ब्लूज, एक ऐसा शो जो आपको आपकी फेवरेट भारतीय क्रिकेट टीम्स और आपके फेवरेट भारतीय क्रिकेटर्स के थोड़ा सा और नजदीक लाता है। शुरुआत करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही ओडीआई सीरीज से, जिसमें पहला मैच रांची में 17 रनों से अपने नाम करके भारतीय टीम ने 1-0 की बढ़त इस सीरीज में बना ली है। इससे पहले कि हम रायपुर में होने वाले दूसरे ओडीआई की बात करें, जरा सा समीक्षा कर लेते हैं कि पहले ओडीआई में बड़ी खबरें कहां से आई। ऑब्वियसली सबसे बड़ी खबर होने वाली थी विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी। फरवरी के बाद पहली बार एक इंटरनेशनल मुकाबला भारतीय जर्सी में भारतीय सरजमी पे खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने 60वीं बार 50 का आंकड़ा किया पार वनडे इंटरनेशनल्स में, तो विराट कोहली ने वो मुकाम हासिल किया जो आज तक किसी भी बल्लेबाज ने किसी भी फॉर्मेट में नहीं किया, यानी कि अपना 52वां ओडीआई 100 जड़ दिया। साथ ही 83वीं इंटरनेशनल सेंचुरी थी, साथ ही तीसरा 100 था जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में। तो एक ऐसा मैदान जो उन्हें बहुत रास आता है और भारत ने उसी के दम पे बना दिए 349 रन। न भूले केएल राहुल नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने आए थे और कप्तान ने भी अपने नाम एक और अर्धशतक कर लिया है अब इस फॉर्मेट में। जवाब में साउथ अफ्रीका एक समय 11 पे 3 थे, लेकिन कुछ जरूरी योगदान आए मैथ्यू ब्रीट्स का, एक आतिशी अर्धशतक देखने को मिला मार्को यानसन का और एक फाइटिंग हाफ सेंचुरी कॉबिन बॉश की। हालांकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और हर्षित राणा ने 3 विकेट लेके एक बार फिर से भारत की स्ट्रेंथ इन डेप्थ का परिचय दिया और 17 रन के फासले से भारत ने यह मुकाबला अपने नाम किया। अपनी शानदार 135 रनों की पारी के दम पे एक बार फिर से एक शतक एक विनिंग कॉज में विराट कोहली ने बनाया और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है लेते नजर आए। लेकिन उस प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड को लेने के बाद विराट कोहली ने क्या कहा और अपनी पारी को और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। You know, I've never been a big believer of a lot of preparation, if that makes sense. All my cricket has been mental. As long as I feel mentally I can play the game, I work physically very hard every day of my life. It's got nothing to do with cricket anymore. It's the way I live. So as long as my fitness levels are up and my mental enjoyment and sharpness is there, when you can visualize the game and you see yourself running as hard, reacting fast on the ball, then you know it's fine. I mean, one of the days when the game opens up and you get a start, you'll be able to score some runs. The thing is that I visualize the game a lot in my mind, and as long as when I think about the game, when I visualize it, if I see myself being as intense, as sharp, taking the fielders on, taking the bowlers on, then I know I'm in a good space and I kind of can relax and just play out there. किंग कोहली ने अपनी पारी के बयां किया। Again, I'm very happy that I have seen 100 of Virat live. 52. He gets it for the bounce.